Good evening, and I welcome you, students. We have finished the topic of why do we fall ill, and we have learned few things before I begin the question answer sessions. What is a health, student? If a question is asked, what is health? What is health? If a question is given, question one, what is health? According to the topic, the chapter which we have studied, why do we fall ill? So we defined it state of physical, mental, and social well-being. What do we Yes, sir. state of physical, mental, social well-being. So it is a combination of the three things. So many factors will come. Therefore, question number two, what we are saying, what is the health is dependent on? What are the factors on which health depends? What are the factors on which health depends, students? Sir, it depends on our social environment. On which health depends then. Second question. So the health is dependent on physical surroundings and economic status. So we can say that it depends on our physical surroundings. So many things will be there as more questions are coming. Physical surroundings. Note down everything. Physical surroundings, whatever we are saying, the environment. Then what we are saying, even it depends on the economic status of the people. People have to have good means of living, otherwise they will fall sick. Then we have discussed, student, the classification of diseases. What we told you, there are two types of diseases. Acute and chronic disease. And chronic. What is the difference between the two? Sir, acute diseases occur for a very short time, whereas the chronic diseases occur for a very long period of time. Okay, the next question could be, diseases can be due to what? Diseases can be due to what type of disease you have studied? Infections or non-infectious? Yes, sir. Infectious or non-infectious. What is the difference between the two? Infectious diseases are caused by the microorganisms around us, but non-infectious diseases are caused by our internal factors. They are And not caused by microbes. what are the agents of infections? There are agents of infections. Viruses, fungi, bacteria. Okay, then they asked you question, student, how the infectious disease is spread. How infectious disease is spread? Through air, water, vectors. ठीक है. You are saying air, water, ठीक है? They can spread through air, water, or physical contact. We have given you complete picture of that also in our YouTube channels. Vectors. Now the question was there, why prevention is more desirable than the treatment? What do you think? Prevention is more desirable than the treatment? Yes, sir. What answer you will give, students? Sir, some diseases can have long-term drastic effects, which can, as a result, we can never be cured. And some disease, treatment, sometimes treatment requires time, so we have to remain bedridden. And the infectious person can serve as a source from where disease can spread from one person to another. Another question was, how can be infectious
infectious diseases prevented? We discussed the methods of prevention of infectious diseases. Yes, sir. What methods were used, student? Sir, General. first to reduce the symptoms of disease, and second to kill off the disease causing microbes. Therefore, we understand you have also studied what we talked about vaccination and immunization. And very important questions, what we are talking of. What are vaccines, student? What are vaccines? Now Sir, you are. vaccines are the dose of specialized medication which immunes us to the other specific diseases. Have you been, students, vaccinated for corona, COVID, and 19? Yes, sir. Okay. So you are aware at the present situation that vaccines are very, very important. And now the vaccines have been allowed for the students of what age? 15 to 18 years. So what vaccines do? What do you mean by immunization? What is immunization? Why vaccines are given? You say this will provide you immunity. What is immunization? Sir, it is a process through which person which is immunized develops resistance against the disease. A Or particular what we disease. call as antibodies. Yes, sir. And there is a time period up to which it could be effective. Yes, sir. Okay. So this is very important topic which we have discussed. As you can see, the questions which are coming are very relevant and are what we are doing at this moment of time. All these means infection is already there openly all over the world, and it is a very serious infection. And what methods we are using, both specific method, vaccination, immunization, and staying at home, maintaining a social distance, wearing mask, washing your hands, all these methods are being used, which involves oral health hygiene as well as vaccination. You have any idea what is the vaccination, COVID-19 vaccine? What it is called? Yes, sir. What it is? Covaxin and Covishield. From our country, huh? And the other ones? Sputnik Anyway, and Pfizer. try to know these questions could be now hot questions in the coming examination because they are current topics. What is happening, we should be aware of it. So here is a question from the book. What are different means by which infectious diseases are spread? What are the different means by infectious diseases are spread, students? Sir, they can spread through air, water, vectors, casual physical contact. Okay. So there can be answer of this student. There can be direct contact, direct transmission. What do you studied in direct transmission? You have an animal bite or some contact is there or the soil or anything. Yes. And direct transmission can be there, students. There, just like direct sexual contacts are there, and there could be indirect transmissions. We have shown you a picture of that also, how the indirect transmissions are taking place. The pathogens are carried through some intermediate agents, like food, Yes. water, vectors, air, dust, etc., droplets. So they are examples of the indirect transmission which is happening. Another question is coming up, becoming favorite. What precaution can you take in your school to reduce the incidence of infectious disease? This is the most relevant question right now. So you already have answers to this. What answer you are giving for this? Sir, we will maintain distance from the person who is infected.
and we will wash our hands regularly and avoid The general instructions have already been given, and also whatever you are going to the school, maintain social distance, mask, clean your hands, and avoid the use of washroom, avoid the use of books, bags, or objects of other students, and try to do not maintain any physical contacts. And if anyone is sick, then don't allow them to be in the school, ask them to stay at home, isolate them. All these precautions already as the instructions which we are following. Okay, this is important, very important, because you will be going to school. Schools can't be closed forever, you know it. That if you have to have this type of epidemics, you have to live with them, but you have to take the necessary precautions, as we say, and then start working, because we cannot stop working also. You know, it is not possible. Whether it will be exams or anything, we have to go back to the school, but with a different preparation. Another important question is becoming nowadays, what is immunization, students? Important question for this year. Sir, immunization is a process through which the person which is immunized develops resistance against the So particular development disease. of immunity against the pathogen. ठीक है? You are saying development of immunity. ठीक है? Against a pathogen. ठीक है? Specific pathogens, you have specific type of vaccines. That is what you mean by immunization. In immunization, you are chemically or killing the organisms, pathogens which are inside coming in the body, and you already know the mechanism, how it works. We have discussed that in detail. So you can see the YouTube videos which we have uploaded, already answered the question in detail. What is immunization? Important question. What are immunization program available at the nearest health center in your locality? Which of the diseases are major health problems in your area? Okay, now you have already used, student health center in your locality. You have used health center. Which health center you have used for vaccination? Sir, hospital. Okay, whatever hospital, as after you have registered for the vaccine and you were assigned time also. So which are the major health problem? You already know what is the major health problem right now. COVID-19. Okay. Which vaccine you have been given? Covaxin. Co-vaccine. Yes, sir. Spell. Covaxin. Co-vaccine. Yes. Okay. First dose. Yes, sir. Second dose will be given one. Between 5th February and 19th February. After how many days? 30 days. After 30 days. All right. Earlier, you already know polio, measles vaccine, etc. So many things are there. Polio, measles, mumps, rubella, so many vaccines are there. Question number 1 from the exercise of the NCERT is coming. These are very general questions, students. I believe you have to answer them. How many times did you fall ill in the last 1 year? What were the illnesses? Did you fall ill in the last year? Yes. What illness you suffered? Common cold. Achha, you have suffered from common cold, cough, or some fever may be there. Okay? Yes. What think of one change you would make in your habits in order to avoid
So what change you will make in your habits? What you are doing? Are you changing any habit? Yes, sir. What habit you are changing? Sir, to wash the hands regularly before consuming any product. Wash the hands. Then what you are doing? Cold, cough, and fever, how they are spreading. You are wearing a mask now, Yes, sir. and what other you are maintaining cleanliness, Yes, sir. sanitary, and hygiene conditions. Whatever you are doing. Earlier we were not that much careful. This time we are very careful. Earlier we never thought about these things, did we? No. When the problem came, everyone is now having some idea what is cleanliness, what is washing, what is garbage, where the diseases are coming from. Think of one change you would wish for you in surroundings in order to avoid most of the above illnesses. What change you will like to see in your surroundings? Sir, there should be covered sewage and garbage should be disposed of safely. So safe disposal of the garbage. And the drinking water also you have seen is causing some problems. Yes, sir. So you can use filter, boiled water. What else whatever you think, okay, all right, you know about it. Next, what he is saying? A doctor, nurse or health worker is exposed to more sick people than others. Find out how he avoids getting sick herself. Have you seen doctors working in the hospitals? Yes, sir. Sisters, what they are doing to avoid the infections? Sir, they maintain distance from sick people. Doctor is going to attend the patient, nurse is going to attend the patient. How they can maintain a distance? Tell me. Is that the right answer? Wrong answer? They wear mask. Okay. Now what are you saying? They will be interacting with the sick people. They are even going to give test to the sick people. They will checking the sick people then. How they are avoid? You are saying they are putting a mask. Anything else you have seen? Only mask they are wearing now. No, sir. What else they are doing? They are wearing gloves. Hand gloves. Disposable, they will throw it out. Now, for COVID-19, what they are doing? They are wearing they are covering their entire body. Yes, sir. So what is that? Full coverage, full suit for COVID-19, full shield. All these, what they are doing? They are fully covered by shielded student. And they are using, what they are using? Sanitizers. Antiseptic, sanitizers, etc. So whatever you see now, because you are already seeing then in the news also how they are treating. They have to they go to the patient, doctor and health workers, nurses. They cannot maintain a social distance, but they have to take necessary steps. Okay. Conduct a survey in your neighborhood to find out what are the 3 most common diseases. Suggest 3 steps that could be taken by the local. What are the 3 common diseases in your area? Tell me. What you are finding? The dengue, malaria, and typhoid. Dengue. You are having. You are saying dengue. Dengue, malaria, mosquito bite is same thing. Anything you are seeing? Do you see any jaundice or anything? Yes, sir. And a lot of cases of diarrhea you see during.
different seasons you see different type of outbreaks. Whatever, if you are seeing typhoid, you are seeing viral fevers, you are saying cold and cough, very common. All these, whatever you are experiencing. So just 3 steps that would be taken by your local authorities to bring down the 3 steps. कौन से? What are the 3 steps? What are the 3 steps? So they should try to keep our surroundings clean. Safe disposal of garbage. Clean Then drinking water. clean drain. And next, clean drinking water. Okay. Another question is on the screen. Read it, student. Baby is not able to tell his or her caretaker that he is sick. What would you help us to find out the baby is sick? What is the sickness? What do you think? Here's your answer. Sir, when baby is sick, there will be change in his behavior. Especially there will be some symptoms. He is asking for the symptoms. What symptoms you are observing? A small baby, when he is uncomfortable or having pain, what will the baby do? Baby will cry. Baby cannot speak. वो क्या बच्चे रोते देखे नहीं तुमने? Yes, sir. और फीवर हो जाएगा या दिखेगा कि उसे कोल्ड हो गया, खांसी आ गई. अभी देख रहे हो बहुत सारे बच्चों को हो रहा है, मेरे को खबर है मेरे पास. People are not telling, but lot of children are having this now. You may see around you also. अभी ये चल रहा है सब जगह. कोल्ड, सर्दी है ना बहुत. Yes, sir. तो कोल्ड, कफ, फीवर, ये सब हो रहा है बच्चों को. और ये बच्चों को दिख जाता है, लूज मोशंस हो जाती है. और फिर वो दे स्टॉप ईटिंग. देखा तुमने? ये सब चीजें होती हैं. दे डोंट वांट टू ईट, कुछ भी देते हो वॉमिटिंग हो जाती है. Even we feel vomiting when we are not, if we are sick, if we don't eat anything, हमें vomiting हो जाती है. बोलो सही है या गलत है? Yes, sir. It's correct. तो अब फिर ये कैसे पता लगेगा कि सिकनेस क्या है? इसके लिए क्या करोगे? So we can take baby to the doctor and he will get test done. हाँ, तो In अब order तो to- मतलब डॉक्टर की नीड पड़ेगी. आई कैन नॉट से एनीथिंग. तो डॉक्टर क्या करता? डायग्नोसिस करता. ठीक है, तो डायग्नोसिस होगी, डायग्नोसिस होगी. लो इसका स्पेलिंग देखना पड़ेगा. ठीक है, डायग्नोस करेगा. तो डॉक्टर क्या करेगा? डायग्नोस करेगा और कुछ टेस्ट करेगा. ठीक है, तो फिर ये उसके बाद वो बताएगा क्या डिसीज. ऐसे क्या पता लगेगा? ठीक है, चलो. क्वेश्चन आर वेरी जनरल, बट देखो क्या लिखना है पेपर में. When it is exam, you have to be specific. You cannot write whatever you want. You have to know at least what you are talking about. Under which of the following condition is a person most likely to fall sick? When she is recovering from malaria, when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox, when she is on a 4-day fast after recovering from malaria and taking care of someone suffering from chickenpox. अब बताओ क्या आपका आंसर आएगा इसमें?
In all the three cases, she can fall sick. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, मोस्ट लाइकली पूछ रहा है, फिर लाइकली का मतलब समझा नहीं है कि एक ही बताओ फिर हम. Of course it is true, but now the question is as per the question answer most likely कह रहा है. तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑप्शन सी. ओके, तो वो फास्ट पे चले गया और उसके बाद में मलेरिया और फिर चिकन पॉक्स. तो ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन सी. रीजन, यू हैव टू गिव रीजन व्हाई. क्या रीजन दे रहे हो? सर, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया इम्यूनिटी विल बी वेरी लो. भाई इफ द पर्सन इज वीक, और पर्सन बहुत कमजोर है, ठीक है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं लो इम्यूनिटी है. तो फिर क्या होगा? इफ ही गोज, if he takes care of person chicken pox, then what will happen? He will get infected. Yes, sir. She will get infected. तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी. ठीक है. Under which of the following condition are you most likely to fall sick? When you are taking exam, when you travel by a bus, when your friend is suffering from measles, and why? चलो, क्या आंसर दिया आपने? ऑप्शन सी. आंसर आपने कहा सी. वाई? रीजन? Sir, because measles is a very infectious viral disease. Measles is an infectious disease. ठीक है, तो it will pass on from your friend to you. तो ये भी ठीक नहीं है. चलो अब देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं हमारे पास. एमसीक्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 बताइए. Read the question. Which of the following is not a viral disease? Which of the following is not a viral disease? Viral disease क्या होती हैं? फिर बताओ मुझे. What are viral diseases? Diseases spread by viruses. तो जो diseases spread by viruses होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें diseases spread by virus. ठीक है, तो बताइए क्या डेंगू जो है वायरल डिजीज है? Yes, sir. डेंगू वायरल है? Yes, sir. किसने बोला डेंगू वायरल? वो कह रहा है अच्छा डेंगू वायरल है, नॉट ए वायरल डिसीज कह रहा हूं. अच्छा डेंगू क्वेश्चन है, नॉट ए वायरल, ये नहीं पूछा वायरल. ठीक है, ये नॉट है लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना है. तो डेंगू वायरल है, चलो ये वायरल है. एड्स? AIDS is viral disease. ये वायरल है, चलो. टाइफाइड? Sir, it is a bacterial disease. नॉट वायरल हुआ ना, फिर ये नॉट पूछा Yes, था sir. ना. क्वेश्चन को समटाइम्स वी आर ट्रिक्ड स्टूडेंट, दैट इज द प्रॉब्लम. जैसे एकदम पढ़ते हैं शार्पली तो वायरल समझ लेते हैं. यहाँ पे नोट नहीं पढ़ा बहुत सारे स्टूडेंट. देखो ऐसा होता है पेपर में, मैं बता, क्योंकि वी आर ओवर कॉन्फिडेंट और आवर माइंड इज कंडीशन टू ट्रू थिंग्स. फॉल्स कम पूछता है वो, लगता वही है. देखा, तो ये आंसर था इसका टाइफाइड. इन्फ्लुएंजा ये वायरल है? Yes, sir. तो हमने व्हाट आंसर वी आर गिविंग? Option C. ऑप्शन सी, टाइफाइड. और अगर लिखना है तो नाम भी लिख देना स्टूडेंट एग्जाम में, इसलिए कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए. Yes, sir. जब हम जल्दबाजी करते हैं तो मिस्टेक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस में होती है. हमारा जो माइंड होता है ना, इसको पता नहीं लगता, ये नो को छोड़ देता है. Which of the following is not a bacterial disease? बैक्टीरियल डिजीज है, नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज. अब बताओ कौन सी है इसमें से, कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? क्या कोलेरा बैक्टीरियल डिसीज है? Yes, sir. ये बैक्टीरियल है. अच्छा, तो व्हाट इज कोलेरा? होता क्या है ये? Sir, cholera is spread through water. इसमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं? Sir, in cholera, sir, fever,
and vomiting, stomach सिर्फ ache. अब थोड़ा ज्यादा स्टडी करते हैं, इसको चेक कर लेना, इसलिए कह रहा हूँ कि ये डिटेल इन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना पेपर में, समझा करो, क्वेश्चन विल बी चेंज इन द पेपर। अब ट्यूबरकुलोसिस जो है, व्हाट इज दैट, इज इट ए बैक्टीरियल? Yes, sir. ये भी बैक्टीरियल। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, क्या होता है? Sir, tuberculosis, it is caused due to unclean drinking water. आई सेड व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, तुमने तो उसका रीजन बताया, व्हाई, हाउ इट इज कॉज्ड। Sir, it is a bacterial disease. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? Sir, cough and अब देख लेना, स्टडी कर लेना मोर। देखो अब इतना कुछ यहाँ पे लर्न करने के लिए, क्वेश्चन आंसर करना कोई बात, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया, लेकिन इनमें हाउ मच वी कैन लर्न स्टूडेंट, हमारा आइडिया है लर्न करना है। हाउ मच यू कैन लर्न स्टूडेंट, इट डिपेंड्स कि आप कितना स्टडी करते हो। इसको स्टडी करो, स्टडी कोलोरा, स्टडी ट्यूबरकुलोसिस, व्हाट इज इट, व्हाट आर दी सिम्टम्स एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, सब चीजें स्टडी करो। नेक्स्ट कौन सा, एंथ्रेक्स क्या होता है? दिस इज द वे वी लर्न। एंथ्रेक्स क्या होता है, बैक्टीरियल है? yes, sir. व्हाट इज एंथ्रेक्स, होता क्या है ये बताओ। टेल मी, स्टडी करो इसके बारे में, चलो स्टडी करो। आई मीन दीज आर होमवर्क्स फॉर यू। व्हाट इज इन्फ्लुएंजा? Sir, it is not a bacterial disease. तो फिर ये क्या है? Viral disease. ये वायरल से स्प्रेड होता है। Yes. तो आंसर क्या लिखा हमने क्वेश्चन का? Option D. डी। अब ये मोर सबका स्टडी कर लेना, यहाँ पर सिर्फ यही हमारा आइडिया नहीं है कि एक आंसर कर दिया आपने, ये लर्न करो सारा। हो गया, आगे चलूं? Yes, sir. चलो ठीक है, क्वेश्चन 3 पर आ गए स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? अब ये मॉस्किटो बहुत खतरनाक चीज है। देखो, यू नो मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड बाय ए मॉस्किटो। क्या सोच सकते हो, मेरे को भी नहीं पता था इस बात का। कैन यू थिंक अबाउट इट? मच्छर sir. क्या चीज है, लेकिन मच्छर तो राजे को भी मार दिया। अब क्या करें, मॉस्किटो है, मॉस्किटो को तो मारना ही बड़ा मुश्किल है। और इसको पकड़ सकते हो क्या हम? टेल मी हाउ No, स्मॉल sir. इट इज। कई जगह तो बहुत मच्छर है, तुम्हें पता है, सम प्लेसेस आर हाईली इन्फेक्टेड बाय मॉस्किटो, बहुत है। तो फिर क्या क्या लिखा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट, फिर नोट आ गया इसमें। बताओ, ब्रेन फीवर जो होती है, इज इट ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो? Yes, sir. तो इसको मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। ओके भाई। मलेरिया? Yes, sir. It is transmitted by mosquito. टाइफाइड? No, sir. नो। डेंगू? Yes, sir. मॉस्किटो। देखो कितना लर्न करने वाली बातें। तो आंसर क्या लिखा? Option C. टाइफाइड। अब यू विल लर्न द, इनके बारे में लर्न करना है आपको। क्या क्या लर्न करना है? व्हाट आर दीज, व्हाट, ये क्या है, ठीक है। सिम्टम्स, इनके साइंस क्या होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या रहा हूं, सिम्टम्स, चलो ये सिम्टम्स हो गए। साइन इनके क्या होंगे, देन इनकी रेमेडी क्या है। ये होमवर्क में जा रहा सारा, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न मोर दे हैव टू गो। चलो आगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following diseases caused by protozoans? अब बताओ, what are protozoans? Sir, single-celled microorganisms. Single celled microorganisms है ये, सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स है भाई प्रोटोजोन। Which are the following diseases caused है, ये caused by the protozoans है। Which are the caused by the protozoans, student? अब बताओ, क्या मलेरिया caused by protozoan है? Yes, sir. Yes. Influenza? No, sir. No. AIDS? No, sir. Cholera? No, sir. तो ये किससे कॉज होते हैं? Influenza and AIDS is caused by viruses, ये and वायरस cholera. है, ये वायरस है, और ये क्या है?
cholera is caused by bacteria. देखो हम कितना कुछ लर्न कर रहे हैं। तो आंसर क्या लिखा? Option A. और क्या लिखा मैंने? मलेरिया। होमवर्क क्या मिला? लर्न क्या करना है अब तुमने? इन सब डिसीज के बारे में लर्न करना है। Yes, sir. All the time I am saying that you will what is this symptom science और इनको कैसे बचाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए स्टूडेंट्स। Which of the following has long-term effects on health of an individual? Long term, बताओ long term effect वाले कौन सी होती है, acute या chronic? Chronic. Chronic diseases। चलो वेरी गुड। तो बताओ कि इनमें से क्या कॉमन कोल्ड लॉन्ग टर्म है? No, sir. नो। चिकन पॉक्स? No, sir. च्यूइंग टोबैको? Yes, sir. स्ट्रेस? No, sir. तो ये कौन सी होती है बताओ? क्या Chronic इसमें disease. कौन सी क्रॉनिक डिसीज होती है, उसका नाम बताओ। क्या हुआ जिसमें जो टोबैको खाते हैं उनको क्या हो रहा है? इतना बड़ा तुम्हें पता है इसके बारे में? कौन सी डिसीज होती है? Cancer. हमें पता है कि बहुत यंग एज में लोगों के कैंसर है, मुंह के गले के, सारा बहुत डेंजरस है। आपने पिक्चर्स देखी होंगी कई बार, वो दिखाते हैं, मूवीज में भी दिखाते हैं। देखो कितना वो मुंह, ये जो सिगरेट पीते हैं उनका दिखाया नहीं उन्होंने मुंह कैसे, और यहाँ पर ये जो तंबाकू खाते हैं बहुत दिखाते हैं न्यूज में भी। चलो भी सही है। नेक्स्ट पर आ गए। Which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person? चलो अब infected person के पास पहुंच गए, आप बताओ कौन सा होगा? Which of the following will make you ill? First, high blood pressure. No, sir. अगर हाई बीपी के साथ मैं बैठूंगा मुझे थोड़ी हो जाएगा? नो। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी? No, sir. नो। स्नीजिंग? Yes, sir. ब्लड कैंसर? No, sir. तो इसी को तो अवॉइड कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो ये जो वायरल अभी अभी जो न्यूज आ रही है कि बहुत सारा फैल गया, क्या हो रहा है, लोग ये स्नीजिंग कर रहे हैं, ज्यादातर कोल्ड कफ और ये जुकाम वगैरह हो रहा है, खांसी गला जुकाम, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से फैलेगा। आंसर क्या लिखा? Option C. Sneezing. चलो ये भी समझ लिया आपने। और लर्न क्या करना है आपको इन सब के बारे में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। Our purpose is not simply answering the question. You are very clear. We are trying to learn as much as possible. जितना नॉलेज हमारे को होगा उतना बेटर है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पेपर में, कहीं से भी आएगा। और हायर क्लासेस में जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, लाइफ में जितना लर्न करते हैं वो भी कम होता है। एंड आई बिलीव आई नो नथिंग एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। वाई आई टीच? बिकॉज आई वांट टू लर्न। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे लर्न करना पड़ता है। लर्निंग ही मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, इसीलिए पढ़ाता हूँ। और मुझे बहुत कम आता है। मैंने देखा नॉलेज कितनी ज्यादा है, क्या मैं इतना सीख सकता हूँ? इतना भी नहीं मुझे आता अगर मैं पढ़ाता नहीं स्टूडेंट्स। मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, वहां पे रुक जाता हूँ, बार बार सोचता हूँ, तुमसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमसे भी लर्न करता हूँ, भाई बताओ बताओ। अब मैं हर डिसीज के बारे में तो स्टडी नहीं कर सकता। आई एम नॉट ए डॉक्टर, ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ इनका मेडिकल का, कि मेरे पास इतना समय भी नहीं है। अगर मैं कैंसर भाई पढ़ता रहूं तो कितनी किताबें हैं पता तुम्हें? वो मैं पढ़ ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, हाउ मच एवरी वन लाइन हैज हाउ मेनी मटेरियल, हाउ मच मटेरियल इज देयर। आज की डेट में कितनी रिसर्च हो रही है, कितना इंफॉर्मेशन है। तो हम कोशिश करते हैं कि एज पॉसिबल, आपको इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज यू आर यंग, आपकी एज छोटी है, आप अभी ज्यादा लर्न कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ भाई लर्न करना। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, खाली टाइम पर वेस्ट मत करो। खाली टाइम में घर में बैठे हो, स्कूल में कुछ नहीं हो रहा, तो और भी सही है भाई, अपना पढ़ लो। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. भाई
स्टूडेंट्स से कि सर स्कूल में जाते थे, बड़ा टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा टाइम वेस्ट होता था, अब स्कूल नहीं जा रहे तो फिर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है। तो ज्यादातर स्टूडेंट सो रहे हैं, बहुत सारे फोन्स के पेरेंट्स के कॉल आए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वगैरह, ये तो बच्चे कुछ करते ही नहीं है। अब उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। दिस इज टाइम दैट यू कैन स्टडी, सेल्फ स्टडी करो, बुक्स पढ़ो। मैं तो तुम्हें बार बार यही मोटिवेट करता हूँ। एक वर्ड आया, मैंने कहा इसको और पढ़ो, जितना मैंने बताया वो कम है, और पढ़ लो। आगे बताओ, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई, बोलो कैसे ट्रांसमिट नहीं होगा, कैन नॉट भी कह रहा है, क्या आंसर लिखोगे? पहला कौन सा? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से क्या एड्स ट्रांसमिट होता है? बोलो Yes, यस, sir. ट्रांसमिट होता है। हग्स से ट्रांसमिट होता है? No, sir. नो। ब्रीस्ट फीडिंग से Yes, sir. ट्रांसमिट होता है, ये यस हो गया, यस हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से? Yes, sir. तो फिर आंसर क्या लिखा आपने? Option B, hugs. चलो हग्स हो गया, ये क्वेश्चन आया था पेपर में इसलिए दे दिए। और ये स्टूडेंट्स थोड़े से मतलब ट्रिक होता है, उन्हें सारे आंसर ऐसे लगते हैं भाई, सभी सही लग रहे थे यहाँ तो, मतलब ऐसा लगता है। चलो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 आ गया, ये पेपर में कई बार आया। मेकिंग एंटीवायरल ड्रग इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, इज इट ट्रू? Yes, sir. अच्छा अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है। वायरसेस मेक यूज ऑफ होस्ट मशीनरी, बोलो ये सही है या गलत है? Sir, this is wrong. रॉन्ग है। तो जो कोरोना वायरस है वो क्या कर रहा है? तुम कह रहे हो रॉन्ग है। कोरोना वायरस क्या कर रहा है, किसकी मशीनरी यूज कर रहा है? अरे वायरस क्या होता है, वायरस की डेफिनेशन क्या बताई थी? जो होस्ट होता है उसी के अंदर तो जाता है वो, और कहाँ जाता है, उसी को यूज करता है, तो वो मशीनरी तो है हमारी, और क्या है? Yes, sir. तो ये तो ट्रू है। आगे बोलो, वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सोचो सोचो फिर आंसर करो। बोलो इज इट ट्रू और फॉल्स? Sir, false. चलो ये तो फॉल्स है। Viruses have very few biochemical mechanism of their own. Sir, this is true. ये ट्रू है। Viruses have a protein coat, बोलो। So this is false. प्रोटीन कोड, ये फॉल्स है। तो आंसर में क्या क्या आया फिर इसके आंसर में? ए एंड सी बोथ ट्रू। ठीक है, Yes, sir. चलो let us see the next question is on the screen students. Question number 10, which are the following causes काला जार? ये इसके बारे में बहुत आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। काला जार क्या नाम था? एस्कैरीज, सोमिया, लिशमेनिया, बैक्टीरिया क्या था इसका नाम? Sir, option C, leishmania. ये वाला? Yes, sir. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर सी है काला जार का। ये क्या होता है? Protozoan. लिशमेनिया, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया। तो ये क्या है, पैरासिटिक प्रोटोजोन? Yes, sir. अच्छा ठीक है, पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर स्टूडेंट। इफ यू लिव इन क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस, इट इज पॉसिबल दैट यू मे सफर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो बताओ, अगर आपके घर सारे दरवाजे बंद हैं और क्राउडेड है, तो क्राउडेड जगह रहती है, तो क्या होने वाला है? कौन सी ज्यादा डिसीज के डेंजर पड़ गया? Airborne diseases. कैंसर तो कुछ नहीं है, एड्स भी नहीं है, तो एयरबॉर्न नहीं है। आंसर सी लिखा आपने, एयरबॉर्न
diseases. Very good. Which disease is not transmitted by mosquitoes? Pneumonia. Which is not आई अच्छा तो डेंगू तो मॉस्किटो वाली है, मलेरिया भी मॉस्किटो है, और ये भी मॉस्किटो है, और निमोनिया नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो. व्हाट इज द आंसर देन? Option D. तो निमोनिया कैसे होता है? Sir, it can be transferred through coughing or sneezing. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स. Which of the following is not important for individual health? Living in clean space, good economic conditions, social equality, harmony, living in large and well furnished house. What is the correct answer here? Not important कह रहा है. Living in clean space तो important है. Yes, sir. Good economic condition important, social important. Important. This Not large important. well furnished से क्या होगा? Not important. And what answer you are giving? Option D. Answer D. चलो. हर एक के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर आंसर लिखना. चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है. राइट नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट इसने कही है. रॉन्ग स्टेटमेंट. हाई ब्लड प्रेशर इज कास्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लॉक ऑफ एक्सरसाइज. बोलो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? True. Cancers are caused by genetic abnormality. True or false? True. Peptic ulcer are caused by eating acidic food. True or false? True. अब एक इसके ऊपर एक पूरा आपको डायग्राम दिखाया था Yes, sir. इन अवर वीडियो. क्या फाइंडिंग थी उसके अंदर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा पेपर में. व्हाट वाज द फाइंडिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर? किसकी थी वो बुक में? Warren and Marshall. दे वर गिवन नोबेल प्राइज. उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? Bacteria that causes peptic ulcer. इट वाज कॉज्ड बाय क्या क्या फाइंड किया था? बैक्टीरियम. Yes, sir. तो फिर आपका आंसर गलत हो गया. ये इसलिए दिया था बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही लिखेंगे. ये फॉल्स है. दिस इज फॉल्स. इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डायग्राम दी है बुक में. ये क्वेश्चन 10 बार आया डिफरेंट वे में, और रीजन असर्शन की फॉर्म में भी आया स्टूडेंट्स को. एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय नॉट, ये भी ट्रू है. चलो अब आंसर क्या लिखा फिर आपने? Sir, option D is false. चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Sir, in NCERT it's इसे given लिखा है option. नॉट कॉज्ड बाय. Sir, in NCERT it's given it's caused by staphylococci. कॉज्ड बाय दिस. Yes, sir. तो चेक कर लेना, फिर चेक कर लेना. ये तो हमें पता ही है. सी अब डी का भी चेक कर लेना. चलो देख लेना क्या लिखा, ट्रू और फॉल्स चेक कर लेना. मेनली इसके लिए दिया था ये पेप्टिक अल्सर का, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट. Why should not allow mosquitoes to breed in our surrounding? Because
multiply very fast and cause pollution. Is it true or false? False. Are vectors for many diseases? True. Bite and cause skin diseases? False. Are not important insects? False. So what is the true answer? Option B. Option answer is B. Are vectors for many diseases? Are vectors for many diseases. So all right, students, this ends up the question answer session. There were some important questions which we discussed on the chapter of why we fall ill. I hope this will be the most important lecture, because here we have discussed very large variety of questions, and most of the questions are important. They could be asked in examination in this form or in any other form. And you can share our videos with all the students. And we hope to meet you next time, students, with the next topic of sound. Sound is very important, interesting chapter. We will go for that. Okay, then. Bye-bye and see you next time. Thank you, sir.